Hello everyone, welcome back to another video. So in today's video I will share 4 Pakistani perfumes that are similar to Carolina Herrera Good Girl perfume. Actually there were 5 perfumes, but one of them is kind of discontinued, I think. So we will not talk much about it. These perfumes are not exact dupes, okay? And but they are kind of same vibe and kind of in the same category. So let's start the video. But before moving on, please hit like and subscribe to my channel and let me know in the comments below what kind of videos you would like to watch on this channel. So here I also have a Sandle perfume, but this is not the original Good Girl perfume, ठीक है, बल्कि ये एक dupe है from a smart collection which is for around 500 rupees and it's in 25 ml bottles, ठीक है, और ये मैन्युफैक्चर होते हैं दुबई में. सो मैं इसका जो लिंक होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. देयर आर 2 फेसबुक पेजेस वेयर यू कैन ऑर्डर दिस, वेयर आई नो कि उनके पास होंगे, और दराज के भी कुछ लिंक्स हैं. आई विल लिंक दैम डाउन इन द डिस्क्रिप्शन. So let's first discuss about what is the fragrance, what is the scent of Carolina Herrera Good Girl. So let me explain. This perfume is actually fresh, it is floral, it is sweet, dusty, and it is dusty but kind of powdery, like डस्टी है और इसकी इसी वजह से ये पाउडरी है, ठीक है. एंड येट इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. इट डज़ नॉट गिव अवे इट्स पोटेंसी, या जो इसकी लास्टिंग पावर है इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड. तो पाउडरी या डस्टी होने की वजह से अपनी लास्टिंग पावर नहीं खोता. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉफ़ी एंड इट हैज़ ककाओ. cacao sweetness is a different kind of sweetness, like there are different kinds of sweetness in perfumes, ठीक है. अगर आप को कभी देखेंगे ना बहुत ज़्यादा शुगरी स्वीट होगी, वो हम किसी और वीडियो में कभी डिस्कस कर लेंगे, बट दिस वन इज़ cacao sweet, ठीक है. एंड दिस इज़ ऑल्सो creamy which comes from tonka bean, so it's also a woody fragrance in the base notes, and it also has musk. सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स. मैं इसकी सारी जो नोट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन कर लूँगी, सो यू कैन ऑल्सो चेक कि कितने सारे कंपोनेंट्स हैं इसमें. इसकी बहुत सारी नोट्स हैं. सो आई थिंक ये जो मैंने अभी नोट्स आपको बताई हैं या जो अकॉर्ड्स बताई हैं, ये वो अकॉर्ड्स हैं जो कि मैं प्रोमिनेंटली इनको मतलब ऑब्जर्व कर सकती हूँ या डिटेक्ट कर सकती हूँ. So this one is a sexy, sweet, feminine fragrance, and it is suitable for every day, every occasion, every weather or season. तो मोस्टली जो स्वीट परफ्यूम्स होते हैं वो फ्रेश नहीं होते, वो स्टिकी काइंड के होते हैं. बट दिस वन इज़ नॉट स्टिकी एंड इट इज़ नॉट वेरी ओवरवेलमिंगली ऑन टू योर हेड kind of fragrance, but it is a fresh, dusty, powdery kind of sweet fragrance which lasts a long time. So I also like this fragrance and I definitely recommend it, and it's a very easy going kind of fragrance, suitable for every occasion. जैसे कि मैंने बताया, it is very versatile, so I like it. तो अब जैसे कि आपको आइडिया मिल गया है कि हाउ द फ्रेग्रेंस इज़, सो लेट्स मूव ऑन टू द सिमिलर परफ्यूम्स. And I'm not talking about any perfume in the world, I'm just talking about Pakistani branded perfumes. So the first one, let's get it out of the way because it is kind of discontinued, I think. It is Outfitters Golden Goddess. तो ये उनका Outfitters वालों ने जो perfumes लॉन्च किए थे उसमें से एक perfume था Golden Goddess, which was very similar to Carolina Herrera Good Girl, and it was a cacao sweet, fresh, airy, powdery, that kind of fragrance. But it is, I think, discontinued or what, because अब उनकी वेबसाइट पे परफ्यूम आता नहीं है, and I think Outfitters have discontinued their whole range. I think there are 1 or 2 perfumes on the website now, और वो उसी को शायद स्टॉक उसका क्लियर कर रहे हैं, सेल पे ही हैं वो दोनों. नेक्स्ट अप विल डिस्कस अबाउट मारिया बीज गार्नेट परफ्यूम. ये 30 ml की पैकेजिंग में इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और इसकी प्राइस है 1790. अच्छा, मारिया बी की वेबसाइट पे एज सच कोई नोट्स वगैरह मेंशन नहीं है, बट आई ट्राइड इट माई सेल्फ एंड आई फाउंड इट very similar to Carolina Herrera Good Girl, and it is also a sweet, airy, fresh, that kind of fragrance. And Maria B की fragrances last so well, और मतलब कि आप समझ लें पूरा दिन ही ये लास्ट करती हैं आपके कपड़ों पे एंड इवन आपकी स्किन पे, बिकॉज आई हैव मारिया बीज गैया परफ्यूम विच इज़ ग्रीन कलर्ड बॉटल, बट दिस वन इज़ द रेड वन. सो परफ्यूम्स की क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है एंड इट गिव्स वेरी सिमिलर वाइब्स एज गुड गर्ल. सो अगर आप इकोनॉमिकली परचेज़ करना चाहते हैं तो दिस विल बी गुड, क्योंकि ये 30 ml की बॉटल है एंड इट्स प्राइस इज़ वेरी गुड, लाइक 1790 का मिल जाता है ये. सो द नेक्स्ट वी हैव इज़ बीच ट्रीज क्वर्की परफ्यूम.
अच्छा, क्वर्की परफ्यूम की मैं यहाँ पे सारी नोट्स मेंशन कर दूँगी ताकि यू गाइस कैन सी के नोट्स क्या हैं। इसकी टॉप नोट्स में पेयर और ब्लैकबेरी हैं, लेकिन मिडिल नोट्स में इसकी जैस्मिन, आइरिस और ऑरेंज ब्लॉसम है, और बेस नोट में ब्लेंड ऑफ पचूली। इट्स जस्ट रिटन ओवर दैट। तो एज यू गाइस गेस्ड कि जैसे कि इसकी नोट्स बहुत डिफरेंट हैं फ्रॉम ओरिजिनल गुड गर्ल, इसी तरह जो मैं अभी सारे ड्यूप्स आपको शेयर कर रही हूँ उन सब में से भी मोस्ट फारदेस्ट जो सिमिलर है वो ये है, बट इट इज़ इन द सेम वाइब। आई थिंक इट्स बिकॉज के इसमें जो स्वीटनेस है वो आ रही है पेयर से और ब्लैकबेरी से, एंड देन इन द मिडल नोट्स देयर इज़ जैस्मिन एंड आइरिस एंड ऑरेंज ब्लॉसम। तो दीज जो मिडल नोट्स है ना इसकी, दे आर वेरी सिमिलर टू ओरिजिनल गुड गर्ल। तो आई थिंक दिस गिव इट एन इफेक्ट ऑफ दिस गुड गर्ल वाइब। जो आइरिस है वो इसको डस्टी और पाउडरी बनाता है, एंड देन जैस्मिन है जो कि ऑरेंज फ्लावर्स का जो इफ़ेक्ट है इसमें वो एडअप कर रहा है। इट जस्ट लैक्स द नटीनेस ऑफ कैरोलिना हरेरा गुड गर्ल, लाइक आलमंड, लाइक टोंका बीन, वो वाली चीज़ इसमें से मिसिंग है, एंड कॉफ़ी। ठीक है, बाकी सेम वाइब है बिकॉज जो फ्रूट्स हैं इसमें ब्लैकबेरी एंड पेयर, दे एड अप स्वीटनेस ओनली। और जैसे कि गुड गर्ल इज़ ककाओ स्वीट, दिस इज़ मोर फ्रूटियर, बट it is more pinching because of the patchouli which makes it more fresh। और क्योंकि इसमें टॉप नोट्स में कोई आपको फ्रेशनेस वाला फ्रूट नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसमें जो पेयर है और ब्लैकबेरी है, दीज आर फ्रूट्स, तो ये दो पर्पज़ को सर्व कर रहा है, लाइक फ्रेशनेस को भी और स्वीटनेस को भी। सो स्वीटनेस इज़ देयर, फ्रेशनेस इज़ देयर, then there are white flowers and iris, and then in the base notes only patchouli is written, but I think there will be musk and other base notes also। की प्राइस अराउंड 3000 रुपीज़ है फॉर 100 ml, so you can definitely try, it's a good perfume, I really like it। So the next perfume which we'll discuss is Zellbury's Venus। ठीक है, तो ये Zellbury की प्रीमियम कलेक्शंस वाला परफ्यूम है, एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ अराउंड 5000 रुपीज़, एंड इट इज़ 100 ml परफ्यूम। एंड इसकी जो नोट्स मेंशनड हैं वेबसाइट पे वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। दे आर कॉफ़ी, लेमन, ऑरेंज ब्लॉसम, जैस्मिन, बल्गेरियन रोज़ एंड सेडक्टिव सेंट्स, ये लिखा हुआ है इधर। So I guess by seductive scents they mean the sweetness, I guess, because it is a very sweet perfume। And since we are discussing about Good Girls similarity, so it also has a very similar vibes of Good Girls, because you can see there is coffee, there is lemon which makes it fresh, and coffee component bhi hai, and then there are all the white flowers like jasmine and orange blossom, and then there is rose too which is also present in Good Girl, and then there is a heavy dose of sweetness, and in this one I definitely feel like it there is cacao sweetness। okay, I don't know इन्होंने ये notes में क्यों list नहीं किया कि it's a sweet perfume, because these notes on the website are very deceiving, because इधर कहीं mention नहीं है कि it's a स्वीट परफ्यूम, बल्कि लेकिन जब आप इसको जाकर वहाँ पे चेक करेंगे आउटलेट में, तो यू विल गेट टू नो कि इट्स अ स्वीट परफ्यूम, इट्स हेविली स्वीट, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो वैसे मेरी शिकायत है जेलबरी के परफ्यूम से कि दे डोंट लास्ट, बट आई थिंक दिस विल लास्ट बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पोटेंट fragrance, and it is their premium collection, so I hope it will last। But as far as the price is concerned, I think I will not recommend buying this, because you can get Quirky from Beechtree, and there is one more which I'll show after this, which is more economical and more similar to Good Girl। This one I don't really recommend, because इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके आप एक सिमिलर परफ्यूम लेने का I won't recommend you guys। So I feel like इन्होंने ओवर प्राइस किया हुआ है इस परफ्यूम को, आई डोंट नो वाई, बट आई फील लाइक दैट। आई थिंक इट्स अबाउट पैकेजिंग एंड मेकिंग इट प्रीमियम एंड थिंग्स लाइक दैट, सो इट हैज़ अ वेरी गुड पैकेजिंग। बट इफ़ यू वांट टू गिफ्ट समवन, this is the best idea, because you cannot go wrong with Good Girl scent। it is the favorite of all the girls out there, all the women out there, and it's a very feminine fragrance। So last but not the least is Khaadi Oh So Exotic। anyone who watches my channel, they just know कि I really love Khaadi Oh So Exotic, but you cannot find it on Khaadi's website। I don't know what is the problem with Khaadi's website, because they have a lot of perfume in their perfume range, but उनकी वेबसाइट पे हमेशा ही कुछ ना कुछ परफ्यूम्स गायब होते हैं। लाइक जो Oh So Exotic है, ये भी आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है ऑनलाइन, जबकि आप अगर स्टोर में जाएँ तो यू कैन गेट इट।
इसकी प्राइस बहुत अच्छी है, इट इज़ जस्ट फॉर 1990 रुपीज़. सो it is the cheapest from all of these and it is the best from all of these which I have mentioned so far. ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू सेव मनी, ये आपको जो है ना मिनिएचर फॉर्म में भी मिल जाएगा. 30 ml की इसकी परफ्यूम की बॉटल होती है एंड इट इज़ अराउंड 790 और 700 रुपीज़. सो यू कैन गेट इट फॉर अराउंड 800 रुपीज़. 30 ml perfume which is strong and it lasts and it has a very good lasting power. It is not a beast performing लाइक 2 दिन तक ऐसा नहीं है कि कपड़ों से नहीं जाएगा, लेकिन इट्स हैज़ अ वेरी रीज़नेबल एंड वेरी गुड अमाउंट ऑफ लास्टिंग पावर. एंड दिस वन इज़ माई मोस्ट फेवरेट अमंग ऑल दीज विच आई मैंशनड एंड आई हैव दिस इन माई कलेक्शन. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स नोट्स जो कि इसकी वेबसाइट पे मैंशनड हैं. वो हैं स्वीट, fresh, and it has jasmine, it has tonka beans, it has cocoa, it has sandalwood, it has vanilla, it has coffee, it has tuberose, it has tonka beans. So I think it has got all the components which Good Girl has, but I think the missing component in this fragrance is the presence of iris. I think there's no iris in it, but somehow it is also powdery. The dusty effect is there somehow. आई थिंक इन्होंने कुछ और भी चीज़ें यूज़ की होंगी बिकॉज इसकी नोट्स एग्जैक्टली मेंशन नहीं होती खाडी की वेबसाइट पे ना, इन्होंने डिस्क्रिप्शन मेंशन की हुई होती है. सो ड्यू टू दिस, और इन्होंने कहीं पर भी फ्रेश तो इन्होंने लिखा हुआ है वैसे, ठीक है. तो आई थिंक इट्स द फ्रेशनेस विच इज़ मेकिंग इट मोर लाइटर एंड इट्स कैंसलिंग आउट द स्वीटनेस. But anyhow, I love this one the best and it is more similar for me with the Good Girl, and the most similar is also Garnet. और इसमें एक और component है which I think because it is not mentioned on the website कि इसमें coconut भी है, because I feel like that because it is named Oh So Exotic and I feel like that exoticness is coming from the coconut, so it also has some coconut feel to it which I really like. I don't mind that feel, so I really love this perfume. And if you would smell it side by side with the Good Girl perfume, you will get to know that it is very similar with it. So I think इसकी price भी अच्छी है and you can also get a miniature. Also Khaadi has launched its hair mist, so मतलब gift pack इन्होंने launch किया जिसमें hair mist भी है. So I am also looking forward to it. सो यू गाइज़, ये सारे ड्यूप्स मैंने आपको शो कर दिए जो कि पाकिस्तानी परफ्यूम्स में से आई थॉट के दे आर वेरी सिमिलर टू कैरोलिना हरेरा गुड गर्ल परफ्यूम. I think that was all for this video. I hope you liked it. If you did, please hit like and subscribe to my channel. और मुझे comments में please अपना feedback ज़रूर दीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि if you want to see more videos like this on this channel. Thanks so much for watching. Bye.